Hello everyone, welcome to ALS Education Center. Today's topic is speed. So first we will know about the speed here. Speed of a body or object is the distance covered by it in unit time. मीन्स एक ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है इन अ यूनिट टाइम, सो उसे ही हम बोलते हैं स्पीड. What is a standard form to write the speed is the SI unit, or you can say standard unit of speed is meter per second. That is denoted as, first is meter per second and second is meter and second minus 1 to the power. Now, how to calculate speed? That there is a formula for calculating speed is is speed equal total distance covered by total time taken. Total distance covered by total time taken. मतलब एक ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो भी कितने टाइम में. अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा स्पीड आ जाएगा. वन मोर थिंग टू ऐड हियर इज दिस स्पीड. स्पीड टेल्स इज वेदर एन ऑब्जेक्ट इज फास्ट एंड स्लो. मीन्स हमें स्पीड बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो फास्ट चल रहा है या स्लो चल रहा है. जितना तेज हमारा स्पीड रहेगा उतना तेज ही वो ऑब्जेक्ट जो है मूव करेगा. ठीक है. सो द स्पीड of fast moving vehicles like or such as train, car or aeroplane is measured in kilometer per hour. That is denoted as kilometer per hour. So this is a sign for the kilometer per hour. Now we'll find the distance and time. So here, when we have to find the distance and speed and time is given, so the formula for that is distance equal speed into time. मीन्स जब हमें डिस्टेंस फाइंड करना है एंड स्पीड और टाइम दिया हुआ है तो हम स्पीड इंटू टाइम करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो डिस्टेंस आएगा. ठीक है. डिस्टेंस हमें उससे पता चल जाएगा.
सिमिलरली इफ़ वी हैव टू फाइंड टाइम, अगर हमें टाइम फाइंड करना है, सो टाइम के लिए क्या हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हम स्पीड का भी निकाल देंगे, ऑलरेडी हम लोग जो पहले पढ़ लिए हैं, स्पीड इक्वल डिस्टेंस मीन्स टोटल डिस्टेंस अपॉन total time. This is the formula for speed, this is the formula for time, and this is for distance to calculate. Solve two examples for finding out. First is the distance between Lucknow and Delhi is 550 kilometer. A bus takes 11 hours to travel from Lucknow to Delhi. Find the speed of the bus. Speed of bus. How much things are given here? So first is a distance. Distance is given what? 550 kilometer, and the time is given 11 hours. What we have to find? Speed. So first we will write the formula. Speed equal distance upon time. Distance upon time. डिस्टेंस हमारा क्या था, स्पीड हम लोग ऐसे यहाँ लगा देंगे, स्पीड डिस्टेंस हमारा था 550 अपॉन टाइम कितना था, 11 था। अब हम लोग इसको कट कर देंगे, सो 11 1 जो 11 है, 11 5 जो 55 एंड 0 हम लोग वापस सीधा लिख देंगे। सो हमारा आंसर आया 50 किलोमीटर आर। सो हमारा स्पीड कितना हुआ, स्पीड इक्वल 50 kilometer hour. Now second example, a car moving at an average speed of 60 kilometer hour takes 3 hours to reach its destination. Find the distance covered by the car. So what things are given here? I will write given. Given is speed. Speed equal 60 kilometer hour and time is given 3 hours.
what we have to find? Distance. So first we will write the formula for distance is distance equal speed into time. Speed into time. Here we will write distance only, and speed is what? 60, and time is 3. When we will 3 zeros are 0 and 6 threes are 18. So the answer is, means the distance is 180 kilometer. Distance is 180 kilometer. Here our topic is finished about the speed. I hope you all have understood it well. So if you all understand, please like and subscribe with your friends. Bye. Thank you.